हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज हमारी VB.NET की जो है वो थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि परसेंटेज फाइंड आउट करके आपको आउटपुट के तौर पर देगा। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा है और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि कैसे परसेंटेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो तो आप सबको पता ही है कि हमारे पास एक तो 10 मार्क्स होने चाहिए और दूसरे हमारे पास क्या होने चाहिए, टोटल मार्क्स। हम सिंपल क्या करेंगे, अपने ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से, तो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाएंगे अपने फॉर्म के ऊपर, अपने इंटरफेस के ऊपर, और एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसके अंदर यूज़र हमारा ऑब्टेन मार्क्स देगा और दूसरा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर यूज़र अपने टोटल मार्क्स एंटर करेगा, और जो हमारा तीसरा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर हमारी परसेंटेज जो है वो शो हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपना परसेंटेज का प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस प्रोग्राम में हमने ये देखना है कि हमारी जो इनपुट्स कितनी है और हमारी आउटपुट कितनी है। तो हमारी इनपुट्स इस प्रोग्राम के अंदर 2 होंगी, एक ऑब्टेन मार्क्स और एक हमारे पास टोटल मार्क्स। तो उसको हम जब इनपुट आ जाएगी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर पुट करेंगे परसेंटेज के, और परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको टेक्स्ट बॉक्स, तीसरे एक टेक्स्ट बॉक्स में हम उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो वीडियो है उसको आप फॉलो कीजिएगा, जो मैंने स्टेप्स उसके अंदर राइट डाउन कर दिए हैं, साथ साथ नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही होगी, साथ साथ आप प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें और आपको इजीली प्रोग्राम समझ आ जाएगा। कोई चीज़ ना समझ आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।